function relation exercise. Exercise 1.2, and we are doing question number 3. Prove that the greatest integer function f such that r to r. Okay, just a minute. So exercise 1.2, question number 3. Prove that the greatest integer function defined from mapping from R to R given by fx equals to fx equals to greatest integer function. Okay, where this is greatest integer function less than equal to denotes the greatest integer less than or equal to x. Okay, so such type of function can never be 1 because if you take any values between 0 to 1, we have always 0. Okay, so if we take let 0 less than x less than 1, then for any values we have fx equals to 0, right? Okay. Suppose we take x equals to 0.2, then I have 0.2 is what? 0. Okay, we take x equals to 0.9, still f 0.9 is what? 0. And if we take any values between 1 and 2, value of function is always 1. Means if we take x equals to 1.5, then f 1.5 is what? 1. Any values, in fact. If we take x equals to 1.999, still it is 1.999. The value of function is still 1. Okay, so it cannot be a 1 function, right? So it is not a 1 function. So it cannot be a 1 function. Okay, now on to के लिए हम कंसिडर करते हैं let fx equals to, or on to let fx equals to anything, let 0.7, 0.5, 0.5. Okay, why 0.5? Because 0.5 belongs to real number and the function is defined for real number, it belongs to R. So but the function is greatest integer function is always valid for, always defined for integral function, integral value. Okay, so the value of fx is always integers. But fx equals to greatest integer function x is always an integer, always an integer. Okay, hence it cannot be 1. Hence it
cannot be onto. Now doing question number 5. Question number 5 is quite clear. We have already discussed it while doing doing introduction of function. Modulus function has always two values. It means for negative values it is positive. For positive values it is again positive. Suppose we are taking value of x equals to -2. For modulus function, the value will become 2. And if we take x equals to 2, again it is 2. So it is many one function. It cannot be one function, right? So question 4 you can do at home. Question 5 we have already discussed. Signum function is question number 5. Signum function. So that the signum function such that it is defined from mapping from R to R given by fx equals to 1 if x greater than 0, 0 if x equals to 0, and -1 if x less than 0. It's very clear that if we take any values which is greater than 0, any value of x greater than 0, x is equals to 1, right? Also, for any values of x less than 0, fx is 1, fx equals to -1. So cannot be, this comes for signum function. So signum function cannot be one function or injective function. One or injective function. उज्जवल अन्वी समझ आ रहा है बेटा? बड़ा सिंपल था कि हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन 0 वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन 0 मीन्स हो गया 0 से बड़ा, इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू लेंगे, 100 भी लेंगे x की वैल्यू, स्टिल वी हैव फंक्शन की वैल्यू 1. ठीक है, तो ये फंक्शन 1 तो हो ही नहीं सकता, मेनी वन फंक्शन होगा. ठीक है, सिर्फ आपको वर्ड में एक्सप्लेन करने की जरूरत थी. ठीक है, now for on to let fx equals to -2, because -2 belongs to R, but it is not possible because the value of function is only between -1 to 1. But there is no value of x
exist in codomain. So it is not on. On2 is also called surjective function, right? And 1 is called injective function. So it is neither injective nor surjective. Question number 6. Let A equals to 1, 2, 3, B equals to 4, 5, 6, 7, and let F 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from A to B, so that F is 1, 1. See, it is quite clear from the question. Question 6. We have F equals to 1, 4, 2, 5, 3, 6. Okay. So actually we have F1 equals to 4, F2 equals to 5, F3 equals to 6. We see that they all have unique values, right? For and the domain and range both are well defined in the set. Domain का set A, first element set A का element होता है, second element set B का element होता है, and we clearly see that they all exist in the codomain. Okay, because domain हमारा क्या है 1, 2, 3 है set A का element, और range क्या है 4, 5, 6, 7 है. We see that 4, 5, 6 value codomain B set का part है. So it is clearly 1, 1 function. Clearly it is 1, 1 function. It is 1, 1 function. Also, we observe that for every image P, it has unique P image in set A. So it is onto. So it is onto. सर ऑन टू नहीं था क्वेश्चन में 1 1 था सर सिर्फ 1 1 प्रूव करना था. यस सर 1 1 से प्रूव करेंगे, वहीं छोड़ देंगे. वैसे ऑन टू भी होगा ये, बिकॉज सबके डिस्टिंक्ट प्री इमेज भी है. ठीक है, यस सर ये ऑन टू भी होगा. क्वेश्चन नंबर 9 दो बारी बोर्ड में पूछ चुका है. क्वेश्चन 9 इंपोर्टेंट भी है. Let F so that mapping from n to n natural number के लिए सिर्फ है defined by Fn equals to n plus 1 by 2
n is odd, and n by 2, n is even. N is even. State whether the function f is onto 1 or bijective. State whether the function is bijective. Function is bijective. तो बाइजेक्टिव के लिए 1 और ऑन टू दोनों चेक करना होता है, ठीक है। 1 के लिए पहले देख लीजिए, सबसे आसान तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को। केस 1 लीजिए, सेट ए लिया हमने, इसमें ऑड नंबर चलिए 1 3 5 लिया, ओके। सेट बी, तो ऑड नंबर्स के लिए क्या है, n plus 1/2 है, so this becomes 1 2 3. Okay, now case 2, n is odd, sorry, n is odd लिया हमने, n is even. सर ऊपर करना। n is even, तो इवन अगर लेंगे हम, फिर से सेट ले रहे हैं, सेट ए और सेट बी हमने लिया यहाँ पर 2 4 6, so again we have 1 2 3. Okay, combining case 1 and 2, combining case 1 and case 2. We have values on set A is 1 2 3 4 5 6, and set B we have just 3 elements. We see that for 2 elements of set A, there is just 1 image. So it cannot be 1 function, it is many 1 function. So it is not 1, it is not 1 to show onto. See in this सर question, जब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं। वही बोलने वाला था मैं बेटा, कि इस केस में बाइजेक्टिव दिखाना है, तो बाइजेक्टिव में अगर 1 1 है ही नहीं तो फिर बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, बट ऑन टू आप दिखाना चाहें जरूर दिखा सकते हैं। तो कैसे लेंगे फिर ऑन टू के लिए,
इसमें again we take case 1, n is odd, okay, and any odd number is of the form n equals to 2r plus 1 या m plus 1 ले लो, it is of the form 2r plus 1. Okay, where r belongs to any natural number. There exists and there exists four r plus 1 belongs to natural number. And we have f of 4r plus 1 equals to 4r plus 1 divided by 2, और n is odd के लिए क्या था हमारा n plus 1 by 2 था, n हमने 4r plus 1 कंसिडर किया तो 4r plus 1 plus 1 by 2, so this is actually 2r plus 1 upon 2. Okay, so it becomes 2r plus 1. Therefore, f is onto. So it is 2r plus 1. So 2r plus 1 is again giving the natural number. So it is onto. 3 marks तक हो तो जरूरत नहीं है onto दिखाने की, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों चाहिए, 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो नहीं सकता. इस क्वेश्चन को इसलिए भी बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे ऐसे भी पूछ सकता है, prove that this function is not 1 but onto. तो onto है ये 1 नहीं. Case 2, when n is even. तो इवन नंबर कोई भी होता है वो किस फॉर्म का होता है, 2 के मल्टीपल में होता है. तो सो n इक्वल्स टू हमने ले लिया 2r, r ले लो नेचुरल नंबर. r को नेचुरल नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रखा है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और उसका रेंज भी नेचुरल नंबर है. तो n इक्वल्स टू 2r by 2r. ठीक है, सो देयर exists 4r belongs to n. f of 4r क्या हो जाएगा, f of 4r to 4r by 2 which is 2r. अगेन 2r क्या है, इवन है और नेचुरल नंबर है. सो f is therefore f is onto. Therefore f is onto. But not 1 and onto. It is not 1 and onto. Therefore, it is not bijective. Therefore, it is not bijective.
भगवत साहब, यस सर। ठीक है भगवत साहब। अच्छा सॉरी सर। भगवत साहब, क्लास खत्म होने के टाइम में ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा? तो देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.2 का, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम डिस्कस करेंगे। 10, let a equals to let a equals to r minus 3 and b equals to r minus 1. Consider the function f mapping from a to b defined by fx equals to x minus 2 upon x minus 3 is f11 and onto, मतलब दिखाना है कि 11 और onto है या नहीं है, पता करना is 11 or justify your answer। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं रिज्वाइन करने के बाद। ठीक है ना, एक सेकंड।